While the elites are locked in an internecine power struggle, millions of flood-affected, homeless and destitute citizens have been left to fend for themselves. Most of these wretched families have been practically forced to cater to their own needs of food, shelter, health, and above all, the education of their psychologically traumatized children. The situation is grave in Sindh, where about 20,000 public schools have been destroyed or considerably damaged, depriving hundreds of thousands of poor children of an education, and that too, at the most formative stage of their lives. Although the provincial government has since declared an educational emergency, barring some official meetings and pressers, nothing much has come forth in the form of concrete efforts on the part of the provincial or federal government to rehabilitate these ill-fated schools. Indeed, the prospect of these forgotten children resuming their schooling anytime soon seems rather dim. Although the country is listed among the climatically most vulnerable states, there seems to be hardly any urgency or preparedness on the part of provincial and federal governments to meet the impending, let alone long-term, climatic challenges. Another, possibly disastrous, spell of monsoons is about to begin, yet the Sindh government has neither rehabilitated the broken irrigation infrastructure, nor restored the old clogged-up doras, historical spillways, to save the cities by draining out the floodwater. Also, the promise of reconstructing destroyed houses is still waiting to be fulfilled. Even otherwise, public education, particularly among poorer sections, has hardly been a priority with governments. UNICEF reckons that Pakistan has the world's second highest number of out-of-school children. The numbers themselves are horrifying. 22.8 million children aged 5 to 16, or 44% of the total population in this age group, are out of school. 5m children drop out after the primary level. 11.4m adolescents aged 10 to 14 don't receive any formal education. In Sindh, 52 PC of the poorest children, 58 PC of them girls, are out of school. The other ills include low national spending on public education, a dilapidated educational infrastructure, poor quality of teaching, curricula guided by faith and ideology rather than facts and science, and the opaque recruitment of teachers. The prospect of flood-hit children in Sindh resuming their schooling soon seems dim. Given that 60 PC of our population is composed of the poor, two questions, related to the moral and constitutional foundations of the state, arise. Could a state built on the promise of ensuring social justice, equality before the law, and protection of life, limb, property, and the honor of its citizens, deny for decades the right of citizens to education and hence a decent and productive life? And what are the options for a dejected, destitute, and betrayed citizen to enforce his or her constitutional rights in a constantly transgressing state? In such a situation, the citizen has two options. First, he could join a political party that represents his class or at least protects his rights and liberties. But here this option has long been closed to him. Post-war working class movements that were inspired by Marxist, Leninist and Maoist ideologies, or the later left-leaning progressive platforms, are all but extinct, barring some existing on the fringes. But that doesn't mean that progressive or class-based politics is passé. On the contrary, leftist governments or at least left-oriented social agendas continue to shape much of the world, including Latin America, Europe, and even Modi's India. Regrettably, here, state-sponsored feudal, conservative and populist leaderships have crowded out, rather crushed, the left and working-class politics. All three fountainheads of progressive politics, peasant movements, labor unions, and student bodies, have been virtually stamped out. Instead, private property and capital have become deified in the name of political stability, economic growth, and national security. Labor laws stand drastically rigged in favor of the employer, land reforms lie buried in the cloak of Islamization, and the coercive apparatus, armed with a brutal anti-terrorism code, remains ever ready to smother the voices of dissent. The other option for a wronged citizen is to knock on the door of the court under Article 199, or sparingly, Article 184(3) of the Constitution. In fact, judicial recourse has become the most popular remedy, thanks to an increasingly inefficient and dysfunctional state machinery. But this path is littered with many a pitfall. The courts are overburdened,
Litigation is lengthy and expensive. Policy issues are beyond their scope. The government employs the face value of renowned lawyers, and often it takes a second round of litigation to get a judicial order implemented. In these circumstances, a man of small means, and usually living in a suburban or feudal tribal milieu, will rarely venture out to enforce his fundamental rights by suing the public authorities. As a result, perhaps the sole option left to a poor man, or woman, is either to resign himself to his ill fate, or surrender his civil and political rights to a powerful local honcho or the so-called electable. But ironically, even this surrender won't fetch him transactional benefits unless he really adds to the electoral success or societal power of his putative benefactor. It's a pity that the current democratic dispensation in Sindh, if not in much of the country, is rooted in this pernicious principal-client relationship. The hapless poor must give up on their political freedom to get some crumbs for their family. And this immoral and unconstitutional relationship couldn't have survived without the facilitation of the state. Resultantly, there has developed a permanent nexus between the disempowerment of the common man and the despoliation of national wealth, power, and resources. The powerful handlers of the state, i.e., a coterie of the military, bureaucratic, judicial, business, landed and political elites, continue to thrive while the lot of the poor and powerless worsens. Mercifully, the status quo is now under attack. The principal power center, Punjab, is politically sweltering, Balochistan and KP are facing armed insurgencies, and Sindh is seething with discontent. In these cataclysmic times, ignoring the education of millions of poor children is like preparing the country to become a wasteland in a world run by cutting-edge technology and superhuman resources. The writer is a lawyer and an academic. Published in Dawn, April 8, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. एक तरफ जहां अशराफिया इक़्तिदार की अंदरूनी कशमकश में घिरी हुई है, वहीं सैलाब से मुतासिरा, बेघर और बेसहारा लाखों शहरियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। इन बदबख्त खानदानों में से ज्यादातर अमली तौर पर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने पर मजबूर हैं, खुराक, रहाइश, सेहत और सबसे बढ़कर अपने नफसियाती तौर पर सदमे से 2-4 बच्चों की तालीम। सिंध में सूरत हाल संगीन है, जहां तकरीबन 20,000 सरकारी स्कूल काफी हद तक तबाह हो चुके हैं, जिससे लाखों गरीब बच्चे तालीम से महरूम हो चुके हैं, और वो भी उनकी जिंदगी के इब्तिदाई मरहले में। अगरचे सूबाई हुकूमत ने इसके बाद से तालीमी एमरजेंसी का ऐलान कर रखा है, कुछ सरकारी इजलासों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों को छोड़कर सूबाई या वफाकी हुकूमत की तरफ से इन खराब स्कूलों की बहाली के लिए ठोस कोशिशों की शक्ल में ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है। दर हकीकत, इन भूले हुए बच्चों के जल्द ही अपनी स्कूली तालीम दोबारा शुरू करने के इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। अगरचे मुल्क को आबो हवा के लिहाज से सबसे ज्यादा कमजोर रियासतों में शामिल किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों की तरफ से आने वाले तवील मुद्दती आबो हवा के चैलेंजों से निपटने के लिए शायद ही कोई फौरी तैयारी है। मूनसून का एक और मुमकिना तौर पर तबाहकुन सिलसिला शुरू होने वाला है, फिर भी सिंध हुकूमत ने ना तो टूटे हुए आबपाशी के बुनियादी ढांचे को बहाल किया है और न ही पुराने भरे हुए धोरों तारीखी स्पेलवेज को बहाल किया है ताकि सैलाब के पानी को निकालकर शहरों को बचाया जा सके। इसके अलावा तबाहशुदा घरों की तामीर नो का वदा भी पूरा होने का इंतजार कर रहा है। इसके बावजूद अवामी तालीम खास तौर पर गरीब तबकों में हुकूमतों की तरजीहत में शायद ही रही हो। यूनिसेफ का कहना है कि पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा है। ये अदाद शुमार अपने आप में खौफनाक हैं। 5 से 16 साल की उम्र के 22.8 मिलियन बच्चे इस उम्र के ग्रुप की कल आबादी का 44% स्कूल से बाहर है। प्राइमरी सतह के बाद 50 लाख बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 10 से 14 साल की उम्र के 11.4 मिलियन नौजवान कोई रस्मी तालीम हासिल नहीं करते हैं। सिंध में 52% गरीब तरीन बच्चे, जिनमें 58% लड़कियां हैं, स्कूल से बाहर हैं। दीगर खराबियों में शामिल हैं अवामी तालीम पर कम कौमी खर्च,
खराब तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम का नाकिस मेयार, हकायक और साइंस के बजाय अकीदे और नज़रिए पर मबनी निसाब और असातिज़ा की गैर शफाफ भर्ती। सिंध में सैलाब से मुतासरा बच्चों के जल्द ही स्कूल की तालीम दोबारा शुरू करने के इम्कानात कम नजर आते हैं। ये देखते हुए कि हमारी 60% आबादी गरीबों पर मुश्तमिल है, रियासत की अखलाकी और आईनी बुनियादों से मुताल्लिक दो सवालात पैदा होते हैं। क्या समाजी इंसाफ, कानून के सामने मसावात और अपने शहरियों की जान, आज़ा, अमलाक और इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के वादे पर कायम होने वाली रियासत दहाइयों तक शहरियों के तालीम के हक से इनकार कर सकती है और इस तरह एक महज़्ज़ब और पैदावारी ज़िंदगी गुजार सकती है। और एक मायूस, बेसहारा और धोखेबाज शहरी के पास मुसलसल हद से तजावुज़ करने वाली रियासत में अपने आईनी हुकूक को नाफिज करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? ऐसे में शहरी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले, वो किसी ऐसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं जो उनके तबके की नुमाइंदगी करती है या कम अज़ कम उनके हुकूक और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। लेकिन यहाँ यह ऑप्शन तवील अरसे से उनके लिए बंद है। जंग के बाद मेहनतकश तबके की तहरीकें जो मार्क्सी, लेनिस्ट और मार्क्सवाद नज़रियात आबाद में बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले तरक्की पसंद प्लेटफॉर्म से मुतासिर थी, मदूम हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तरक्की पसंद तबकाती बुनियादों पर सियासत नाकाम है। इसके बरक्स बाएं बाजू की हुकूमतें कम अज़ कम बाएं बाजू पर मबनी समाजी एजेंडा लातीनी अमरीका, यूरोप और यहाँ तक कि मोदी के भारत समेत दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों को तश्कील दे रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ रियासत की सरपरस्ती में जागीरदाराना, कदामत पसंद और पॉपुलिस्ट क़ियादतों ने बाएं बाजू और मेहनतकश तबके की सियासत को कुचल दिया है। तरक्की पसंद सियासत के तीनों सरचश्मे यानी किसान तहरीकें, मजदूर यूनियनें और तलबा तंजीमें अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बजाय सियासी इस्तेहकाम, माशी तरक्की और कौमी सलामती के नाम पर निजी अमलाक और सरमाए को बदनाम कर दिया गया है। लेबर कवानीन आजिर के हक में बड़े पैमाने पर धांधली का शिकार हैं। ज़मीनी इस्लाहात इस्लामाइजेशन के लिबादे में दफन हैं और इंसदा दहशतगर्दी के सफाकाना ज़ाब्ते से लैस जबरी निज़ाम इख्तिलाफ राय की आवाज़ों को दबाने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। एक गलत शहरी के लिए दूसरा ऑप्शन यह है कि वो आइन के आर्टिकल 199 के तहत अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और फिर आर्टिकल 184(3) के तहत। दर हकीकत बढ़ती हुई नाअहल और गैर फ़ाल रियासती मशीनरी की बदौलत अदालती चारा जोई सबसे ज़्यादा मकबूल इलाज बन गई है। लेकिन ये रास्ता बहुत से मसाइल से भरा पड़ा है, अदालतों पर बहुत ज़्यादा बोझ है। कानूनी चारा जोई तवील और महंगी है। पॉलिसी के मसाइल उनके दायरा कार से बाहर हैं। हुकूमत मरूफ वकला की फीस वैल्यू इस्तेमाल करती है और अक्सर अदालती हुक्म को नाफिज करने के लिए कानूनी चारा जोई का दूसरा दौर दरकार होता है। इन हालात में छोटे वसाइल का आदमी और आमतौर पर मुजाफाती या जागीरदाराना कबायली माहौल में रहता है, शाज़ो नादिर ही सरकारी हुकाम के खिलाफ मुकदमा दायर करके अपने बुनियादी हुकूक को नाफिज करने के लिए बाहर निकलता है। इसके नतीजे में शायद एक गरीब मर्द या औरत के पास वाहिद ऑप्शन यह है कि तो वो खुद को अपनी खराब किस्मत के सामने छोड़ दे, अपने शहरी और सियासी हुकूक को किसी ताकतवर मकामी सरबराह नाम निहाद इलेक्टेबल के हवाले कर दे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि इस हथियार डालने से भी उन्हें इस वक्त तक लेन देन का फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपने पसंदीदा खैर खाकी इंतखाबी कामयाबी और समाजी ताकत में इजाफा नहीं करते। अफसोस की बात यह है कि सिंध की मौजूदा जमहूरी हुकूमत अगर मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में नहीं तो इस नुकसानदेह प्रिंसिपल क्लाइंट ताल्लुकात में जड़ी हुई है। बेबस गरीबों को अपनी सियासी आज़ादी को तर्क कर देना चाहिए ताकि वो अपने ख़ानदान के लिए कुछ टुकड़े हासिल कर सकें, और यह गैर अखलाकी और गैर आईनी रिश्ता रियासत की सहूलत के बगैर कायम नहीं रह सकता था। नतीजतन आम आदमी की बेइख्तियारी और कौमी दौलत, ताकत और वसाइल के ज़िया के दरमियान एक मुस्तकिल गठजोड़ पैदा हो गया है। रियासत के ताकतवर हैंडलर्स यानी फौज, ब्यूरोक्रेटिक, अदालती, कारोबारी, जमींदार और सियासी अशराफिया का एक गिरोह फलता फूलता रहता है, जबकि गरीब और बेइख्तियार लोगों की हालत बदतर होती जा रही है। अफसोस की बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल पर अब हमला हो रहा है। इक़्तिदार का सबसे बड़ा मरकज़ पंजाब सियासी तौर पर गर्म है।
बलूचिस्तान और केपी को मुसल्लह बगावतों का सामना है और सिंध बेइत्मीनानी से भरा हुआ है। इस तबाहकुन दौर में लाखों गरीब बच्चों की तालीम को नज़रअंदाज करना जदीद टेक्नोलॉजी और सुपर ह्यूमन रिसोर्सेज से चलने वाली दुनिया में मुल्क को बंजर ज़मीन बनने के लिए तैयार करने के मुतरादिफ है। मज़मून निगार एक वकील और माहिर तालीम हैं। अखज़ शुदा बतारीख 8 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.